हेलो, वेलकम बैक टू सम क्लासेस। जो अभी हम पढ़ रहे थे, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ, और हमने पहले ही क्रैमर्स रूल को कवर किया है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा जस्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, सो मान के चलो कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, तो उस इक्वेशन का ग्राफ हमें प्लॉट करना है। And for that, whatever the basic requisition is there, so we are finding this basic requisition. So first thing is that we need a table. Okay, so coordinate of x, y. So in shortly, what is our main target? We have to complete this table. So whatever the empty spaces are there, we have to find out, and then we have to put it in that box, and then afterwards we will plot the graph. Okay, so let's complete this table. X minus y is equal to so the question is like that, x minus y is equal to 1. For that, x is equal to 0, so minus y is equal to 1, so ultimately y is equal to minus 1. So write down minus 1 here. 0 minus 1. Next, for second condition, y is equal to 0, so x minus y is equal to 1, but y is equal to 0, so x minus 0 is equal to 1, तो y की x की वैल्यू बन गई 1, so your coordinates are 1 and 0. Now let's see for third case. X is equal to 3. For a third case, x is equal to 3, so 3 minus y is equal to 1, so minus y is equal to 1 minus 3, so minus y is equal to minus 2, and y is equal to 2, so write down here 2, so your answer is 3 comma 2. Next, so what is our last question? The last thing is that we have to calculate the value of x, but the condition is that the value of y is equal to minus 3, so therefore x minus of minus 3 is equal to 1. So therefore x minus of minus means minus into minus plus 3 is equal to 1, so therefore x is equal to 1 minus 3, x is equal to minus 2, so write down minus 2, so minus 2 and minus 3. So likewise we have to find out the terms and we have to complete the table. Now what is the next point? So we have to plot it on graph. So before we are plotting this data on a graph, so first we will revise the graph or basic introduction of graph. So let's see, this is a image of a graph. So look into that, this is y-axis and this is x-axis. So this whole horizontal line we call it as a x, and this vertical line we call it as a y. Now if you observe the x-axis and y-axis, they intersect. मान के चलो यहाँ पे वो क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है. क्लियर है? दिस पॉइंट वी कॉल इट एज अ इंटरसेक्शन. ओके, पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट, और वी कॉल इट एज अ ओरिजिन. क्लियर है? अब मान के चलो हम ये जो स्केल है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई. तो अगर मान यहाँ पे आपको स्केल लेना है, तो आपको ऑलवेज ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को कंसिडर करके ही स्केल लेना पड़ेगा. तो ये जो बॉक्स है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का होता है, और जो छोटी छोटी लाइन है वो होती है 1 मिलीमीटर की. क्लियर है? तो इसमें बेसिक क्या है कि मान के चलो अगर आप कुछ ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, तो जो स्केल है वो स्केल हमें इस तरीके से लेना पड़ेगा. मान के चलो अभी ये 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है. मतलब क्या है कि
मान के चलो अगर दो नंबर हम प्लॉट करते हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर मान के चलो इस ग्राफ के लिए अगर हम स्केल लिखते हैं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये उसका स्केल बनेगा। सो ऑन एक्स एक्सिस ऑल्सो वी आर यूजिंग सेम स्केल, ऑन वाई एक्सिस ऑल्सो वी आर यूजिंग सेम स्केल। सो देयरफॉर on x axis and y axis what is our scale, 1 centimeter is equal to 1 unit। तो देख लो हर एक सेंटीमीटर के लिए हमने 1 यूनिट पुट किया। तो पहली लाइन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे भी देख लो -1 -2 -3 -4 ऐसे कंटिन्यू किया है वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पे भी एक्स पे भी -1 -2 -3 ऐसे कंटिन्यू किया है। ठीक है, अगर इस केस में मान के चलो अगर ये सिचुएशन होती तो स्केल अगर 1 सेंटीमीटर की जगह पर अगर 2 सेंटीमीटर होता तो उसका स्केल ये हम ऐसे लिखते हैं। सो फॉर दिस ग्राफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट, मतलब यहाँ पे एक की जगह पे क्या आ जाता, 2 आ जाता। मतलब यहाँ पे स्केल ऐसा बनता 2 4 6 8 10 12 14। सो सिमिलरली एक्स पे भी वैसे ही रहता, वाई एक्सिस पे भी वही सेम रहता। क्लियर है? तो इस पे डिपेंड करता है कि आपका ग्राफ किस तरीके का होगा और जो स्केल है वो क्या रहेगा, ये पहले आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे जो स्केल मैंने ऑलरेडी बोला है 1 सेंटीमीटर, एक्स एंड वाई एक्सिस पे क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, इसलिए हमने ये स्केल रिप्रेजेंट किया। अब ये दो एक्सिस है, वो एक्सिस क्या हो रहे हैं इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इंटरसेक्ट होने की वजह से ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो ये जो 4 पार्ट है तो इन पार्ट को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट कहा जाता है। ठीक है, और ये है पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड वन एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर, इन शॉर्ट कोऑर्डिनेट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, सो कोऑर्डिनेट मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ऑन दैट ग्राफ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट हम मतलब डिस्कस कर रहे हैं तो देख लो एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन क्या होंगे, दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट कीप इन माइंड, अगर दोनों भी नंबर पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली दिस नंबर बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड कंडीशन है सेकंड क्वाड्रेंट, मान के चलो एक्स इज़ नेगेटिव एंड वाई इज़ पॉजिटिव। ठीक है, अगर एक नंबर नेगेटिव है पहला, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली इट द नंबर विल बी, you will observe the number in a second quadrant. Now third quadrant both the numbers are negative. ठीक है, negative negative means x is also negative, y is also negative. So definitely your that point will be somewhere in this third quadrant. Now last quadrant, मान के चलो x is positive and y is negative. So such type of situation is there, then definitely your point which is always in a fourth quadrant. Clear है? Now so we have to chalo now once again we have to discuss about this few examples. ठीक है, so this is the first example, -2 3, obviously first number minus से means -2, so your point is -2 3 which is in a second quadrant. Next example 4 8, okay, suppose this is a positive 4 and positive 8, so definitely this is in a first quadrant. Next number -7 -9, so where is -7, so here -7 -9, obviously this is in a third quadrant. And last one 6 and -5, so definitely x is positive and y is negative, and 6 - 5 definitely which is in a fourth quadrant.
Clear है? So likewise we have to complete this table. Now this is all about the basic one. अब मान के चलो अभी आपको क्या करना है, ये एक जो ग्राफ है वो ग्राफ आपको प्लॉट करना है। और अगर मान के चलोगे अगर इक्वेशन अगर डिस्कस कर रहे हो तो भी आपको ये डिस्कस करना है। लेट्स सी, रिमेंबर ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ऑफ अ टू वेरिएबल इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ये दिमाग में रख के चलना है। किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हो, मतलब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल होगा। टेक एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड फॉर सच टाइप ऑफ इक्वेशंस योर graph is always straight line. When the y variable is a 0, then the equation x is equal to, then the graph is parallel to the y axis. Obviously if the line is the value of x is equal to 2, okay, or in shortly if you want to write it like that, suppose the equation is like that, or coordinates are like that, 2 0 means x is equal to 2. Write down here x is equal to 2 means this point, and y is equal to 0. Okay, y is here, so this line is the equation of x is equal to 2. Clear है? Next, and this x is equal to 2 is a parallel to y. मान के चलो this is a x is equal to 2 line and this is y axis, so both are parallel with each other. Next, when the x variable is 0, okay, exactly opposite. Take example y is equal to 2, so we are plotting a point P, okay, x is equal to 0 and y is equal to 2, so this is a point P. Okay, so x is equal to 0 means your point is here, y is equal to 2 means your point is here. So for this case we have to draw this type of line. Okay, the graph of this point is horizontal line which is parallel to the x axis. Clear है? Now there are few other points are there. Okay, now in this graph we will discuss how to plot a few more graphs. Now take example, this is a one point which is 4 2, next one 2 minus 3, 2 minus 1, 3 2. These are the few points. Okay, they shown on this particular line. So if you want to draw such type of graphs, then what we have to do, just keep in mind, let's see. Okay, so first point that we are drawn on, we want to plot 3 minus 2. This is our point, sorry. So first of all put a line like this. So from 3, just place one line over here like this. Okay, next, chalo, what is the next point? Minus 2. So place one line over there like this and keep it over there. Clear है? अब यहाँ पे देख लो. So this is a point. Okay, so just go to the graph. So this point is minus 3, this point is 2, and we want to find the we want to draw the point on the graph which has a coordinate minus 3 and 2. तो हमने क्या किया, फर्स्ट minus 3 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ठीक है, देन y से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, and we observe the intersecting point. Okay, so this is the intersecting point, and this point is nothing but, suppose P is equal to minus 3 comma 2. Likewise we have to plot a graph. Clear है? Now similarly let's take example, we want to plot a graph of 6 comma minus 3. ठीक है, so this is our target. We are plotting a graph 6
comma minus 3. So what is our target? First draw one vertical line from sorry, 6 minus 3. Where is 6 here? So draw one vertical line from 6. Okay, then minus 3. Once again draw a horizontal line from minus 3. Okay, so these two lines, okay, let's assume it, these two lines intersect over here. These two lines intersect here. So this point we call it as a 6 minus 3. Clear hai? So likewise we have to draw a graph of a given point. Clear hai? Chalo. Now let's move to the next one. How to draw a graph. So this is the one solved example which is given to you. So 2x minus y is equal to 4, and for this we have to draw the graph. So what is the first thing? Solve this table or complete this table and then put a these two points on the graph paper. Now first of all let's find out the points. Where is point first point, second point, as well as a third point. So as we know that first point is 0 minus 4. So x is equal to 0, y is equal to minus 4. So your point is here 0 minus 4. Next one 2 0. So x is equal to, first coordinate is 2, x is equal to 2 and y is equal to 0. So this is your point 0 2. Next one 3 2. Okay, 3 2 means as per the previous one, draw vertical line, okay, like this from 3. Okay, next, and from 2, so draw like this. So here this is your intersecting point. Okay, so this point we call it as a third point, which has a coordinate 3 and 2. Similarly last point minus 1 and minus 6. So minus 1 and minus 6. So draw one line like this. Okay, so this is minus 1. Okay, now draw one line from minus 6. Clear hai? Like this. Okay, now okay, chalo. Now so this is the point. Okay, this intersect when these two lines, dotted lines, intersect with each other. So that point is a minus 1 minus 6. Now at last what we have to do, draw a line to join these all the points. Okay, and this one, which is the equation of a given, this is a graph for a given equation. तो अब मान के चलो ये जो इक्वेशन हमने लिखा है, सो विच इज़ अ इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो ये ग्राफ किसका बन गया? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. सो अभी इसी तरह से हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट जो ग्राफ होगा वो हमें बनाना है. क्लियर है? ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल solve this and then we will move to the graph. So as per the previous condition, we know that equation is x minus y is equal to 1. So here x is equal to 0, so therefore put x is equal to 0. So